Hello, I am Mr. Dilip Kumar Pal, double gold medalist in political science from Sambalpur University, Odisha, working as reader in Belpad Junior College in the district Jharsuguda, Odisha. Welcome to +2 second year political science students to the first chapter of the 4th unit, which relates with features of India's foreign policy and India's relationship with neighbors, mainly China and Pakistan. But today we will discuss main features of the Indian foreign policy. In this video, we will discuss mainly the principles on which Indian foreign policy stands, and it is very important for +2 as well as +3 students. I think it is very useful. If you like it, then share it, subscribe my channel and give the like button. I think it will be beneficial to all, and if you subscribe with my channel, all my videos you can get, which it will be helpful to you for the future competitive examinations. Okay, very good. ओडिया कहक गले आज आम +2 सेकेंड ईयर रो चतुर्थ यूनिट रो प्रथम विषय को अनुध्यान करिबा। जो विषय रे चतुर्थ यूनिट रो प्रथम विषय रही अछि भारत रो वैदेशिक नीति रो उपादान, मुख्य उपादान एवं भारतर पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान सहित भारत संपर्क। किंतु आज आम देखा भारतीय वैदेशिक नीतिर मुख्य वैशिष्ट्य, मुख्य आधार। ओके, वेरी गुड। ताहले ए जो भारतर वैदेशिक नीतिर मुख्य वैशिष्ट्य +2 पिलांग पई एवं +3 पिलांग पई एवं जो माने कंपटीशन परीक्षा दोजन समान पई अत्यंत जरूरी। तेणु यदि वीडियो भल लागिवो लाइक करिवो, आपको शेयर करिवो एवं मोर चैनल को करिवो सब्सक्राइब, जहा कि भविष्यतर वीडियो मध्य तुम पई हेबो उपलब्ध। ओके, वेरी गुड। तला जे हम आरंभ करबा भारतर वैदेशिक नीतिर वैशिष्ट्य। सो टुडे वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ India's foreign policy. We will discuss main features of India's foreign policy in the second paragraph. But in the first paragraph, we will discuss the importance of India's foreign policy. Because in the world, it is the nature of a human being, or it is the instinct of a human being, that it takes interest to know about a particular thing which is value. A matter which has no importance or significance, nobody takes interest to acquire knowledge about that. For example, Magellan. He was the first man who traveled around the world, so we are interested to know about him. Columbus. He was the first man who discovered America in 1492. So we are interested about them because they had some values. So human beings are such beings that they will take interest to know about a particular thing which is value. So before we discuss main features of India's foreign policy, we must discuss first in the first paragraph importance of the foreign policy.
in general and India's foreign policy in particular. So what importance India's foreign policy has in the world? Every individual depends on others. No one can say with proud that I cannot depend on anybody. Every person depends on others, otherwise he cannot survive. In the similar manner, in the world, one country cannot exist by itself. It will have to take support of other nations. For example, India is borrowing technologies of America, and America is also taking some basic medicines from India. Again, India is importing crude oil from Saudi Arabia, but India is also exporting medicines to Saudi Arabia. So in this world, every country depends on others. So every country must have a relationship with other countries, and every country makes its relationship with other countries through foreign policy. Foreign policy is the medium, it is the mean through which a nation establishes its relationship with other nations. So every country must have its foreign policy. Without foreign policy, international relation cannot be possible. So India has also its foreign policy, and on 15th August 1947 India got independence. But prior to that, India had its foreign department, because in 1927 Indian National Congress established foreign department with Jawaharlal Nehru as its spokesman. And in 1926 Guwahati session of the Indian National Congress, in 1927 Chennai session of Indian National Congress, in 1938 Calcutta and Haripur session of Indian National Congress, some principles were added in the foreign policy of India, like anti-imperialism, anti-racialism, anti-colonialism, and support to those nations who are struggling for independence. These were included in the principles of India's foreign policy. And on September 7 in 1946, on September 7, 1946, when Jawaharlal Nehru took over the charge as a foreign minister in the interim government, he also said that India will try to establish a relationship with all nations. With their support, India will try to have international peace, and India will try not to join with any power blocks. In 1947, August 15, when India got independence, many principles have been added in the India's foreign policy, which we will discuss. Mainly 8 important principles on which India's foreign policy is now based, and we will discuss one by one. Okay, very good. ताहले भारतीय वैदेशिक नीतिर वैशिष्ट्य जानिया पे पूर्व प्रथमे फर्स्ट पैराग्राफ में जानिबा भारतीय वैदेशिक नीतिर विशेषत्व। कारण मनुष्य एपरि एक प्राणी से मानक विषय जानिया पे चाहे जहार किछि गुरुत्व थाए। तेणु भारतीय वैदेशिक नीतिर वैशिष्ट्य पूर्व आम जानिया दरकार भारतीय वैदेशिक नीतिर गुरुत्व कौन अच्छे। कारण मनुष्य सदाबले से मानक विषय जानिया पे चाहे जहार किछि गुरुत्व अच्छे। जेपरिक मागेलन
तांका विषय जानिया समस्ते इच्छा प्रकट करिथांते काहेकि ना से प्रथम व्यक्ति जे कि पृथ्वी चारिपटे घूरी आसिथिले कोलंबस को विषय समस्त जानिया चाहती काहेकि ना से 1492 मसीह अमेरिका को करथिले आविष्कार। तेणु जो मानकर विश्वत्व अच्छी से संपर्क जानिया समस्ते करिथांती इच्छा। तेणु भारतीय वैदेशिक नीति रो विशेषत्व रो गुणावली आम जानिया पूर्व भारतीय वैदेशिक नीतिर गुरुत्व आम जानिबा जरूरी, जरी नहीं जरूरी। ताले भारतीय वैदेशिक नीतिर गुरुत्व कौन अच्छी? संसार रे मनीष एपरी एक प्राणी जे कि से मानक विषय जानिया चाहे यार गुरुत्व अच्छी, यार गुरुत्व नहीं मनीष ताके जानिया चाहे ना। ताले संसार रे मनीष एपरी एक प्राणी जे कि एकाकी जीवन यापन करि पारे नाही, मनुष्य पाई अन्य लोक मानक सहायता आवश्यक। बिना अन्य कहार सहायता रे मनुष्य संसार रे बसवास करि परिबो नाही। ठीक से परि संसार रे कोनोसी राष्ट्र एकाकी बसवास करि परिबो नाही। प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र ऊपर निर्भरशील। अमेरिका अत्यंत प्रभावशाली हेले मध्य किछि जरूरी औषध पत्र भारत रो आमदानी करि थाए एवं भारत मध्य अमेरिका रो आमदानी करि थाए उन्नत ज्ञान कौशल। भारत सऊदी अरब को जुगाई थाए गुरुत्वपूर्ण औषध पत्र एवं सऊदी अरब भारत को जुगाई थाए अशोधित खनिज पदार्थ, अशोधित तैल। तेणु संसार रे मनुष्य जमती अन्य मानक उपर निर्भरशील, प्रत्येक राष्ट्र मध्य अन्य राष्ट्र उपर निर्भरशील। तेणु प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन करिया हेले तार वैदेशिक नीति एक माध्यम। वैदेशिक नीति माध्यम रे प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र गुड़िक सहित स्थापन करिथांती संपर्क बा संबंध। तेणु प्रत्येक राष्ट्र एक वैदेशिक नीति रही अछि। भारत मध्य वैदेशिक नीति रही अछि। किंतु 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख दिन भारत स्वाधीन हेले मध्य भारतर वैदेशिक विभाग 1927 मसीह गठन कराइथिला, जहार कि मुखपात्र थिले जवाहरलाल नेहरू। एवं 1927 मसीह जो भारतर वैदेशिक विभाग प्रतिष्ठा कराइथिला एवं वैदेशिक नीति प्रणयन कराइथिला, सेही वैदेशिक नीतिर मुख्य आधार थिला साम्राज्यवाद रो विरोध, वर्ण वैषम्यवाद रो विरोध, उपनिवेशवाद रो विरोध एवं से राष्ट्र गुड़ी को आम समर्थन करवा जो माने कि स्वाधीनता पाई करूचंती संग्राम। किंतु ये सब भारत वैदेशिक नीतिर से समय थिला मुख्य उपादान। 1946 मसीहा सेप्टेम्बर 7 तारिख दिन जो समय कि जवाहरलाल नेहरू को एक अंतरीण सरकार या 1946 मसीह प्रतिष्ठा कराइथिला तार वैदेशिक मंत्री करागला, से समय नेहरू कही भारत सदा सर्वदा समस्त राष्ट्र मान सहित संपर्क स्थापन करने प्रयास करिवो, समस्त राष्ट्र सहायता रे सहित आंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा करिवो एवं किंतु भारत कौनसी गोष्ठी रे जोग देव नाही। ये सब थिला भारतर वैदेशिक नीतिर आधार स्वाधीनता पूर्व। किंतु 1947 मसीह जो समय भारत स्वाधीन है से समय भारतर वैदेशिक नीति रे अनेक गुरुत्वपूर्ण उपादान गुड़िक करागला अंतर्भुक्त, जहाँकि बर्तमान आम ध्यान दी करवा अनुध्यान। भारतर वैदेशिक नीतिर प्रथम उपादान है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को विरोध। फर्स्ट फीचर, द फर्स्ट प्रिंसिपल of India's foreign policy is to oppose imperialism and oppose colonialism. India always opposes colonialism.
Colonialism means a country which conquers other countries and keeps them as its colony. For example, there was a time when Indonesia, Tunisia, Libya, Namibia, Morocco, Algeria were under colonial rule. Till now, India doesn't like those nations who are trying to conquer other countries forcibly and keep them as their colony. India always resists, protests colonialism. Again, India also resists imperialism. Imperialism means when a country tries to exploit other nations. When a country tries to exploit other nations cunningly, it is imperialism. India also doesn't like imperialism. Now, imperialism is in a new form, that is neo-imperialism. Neo-imperialism means there is no need for a country to conquer other nations. Rather, from its own land, it controls other nations. It is a new type of imperialism. So, first feature of India's foreign policy is that India resists colonialism, India resists imperialism. ताले भारत वैदेशिक नीतिर प्रथम उपादान है भारत उपनिवेशवाद को विरोध करता है एवं साम्राज्यवाद को विरोध करता है। उपनिवेशवाद अर्थ है जो समय गोटे देश बलपूर्वक अन्य देश गुड़ी को अधिकार करी शासन करता है, भारत यह समर्थन करना था। जदि गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र गुड़ी को बलपूर्वक अधिकार करी निज उपनिवेश भावे प्रतिष्ठा करिता है, निजर अंचल भावे प्रतिष्ठा करिता है, भारत यह प्रतिरोध करिता है। तेणु पूर्वे भारत इंडोनेशिया, ट्यूनिया, लिबिया, नामीबिया, मोरक्को एवं अल्जेरिया प्रभृति देशर स्वाधीनता पाई करिथिला संग्राम। तेणु भारत उपनिवेशवाद को करिथा तीव्र विरोध। ठीक से परि भारत विरोध करिथा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद अर्थ है यदि गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र गुड़ी को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव शोषण करिथा। गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र गुड़ी को निजर अधीन रखिया प्रयास करिथा। वर्तमान समय एक नूतन प्रकार साम्राज्यवाद परिदृष्ट, जहाँ कि गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र को अधिकार करने आवश्यक नुहे, निज भूखंड अन्य राष्ट्र को गोटे राष्ट्र करुचे नियंत्रण। यह एक नूतन साम्राज्यवाद। किंतु भारत कौन सी राष्ट्र अन्य राष्ट्र उपरे प्रादुर्भाव बा गोटे राष्ट्र अन्य राष्ट्र उपरे प्राधान्य को भारत करिଥାଏ तीव्र भावे विरोध। नंबर 2, गोष्ठी निरपेक्ष नीति रे विश्वास। इंडिया believes in non-alignment policy. Non-alignment means not to join with any power bloc, rather by remaining independent it should try to have a relationship with all nations. Non-alignment means not to join with any power bloc or not to join with any group, rather by remaining independent it must try to have a relationship with all nations and promote world peace. It is non-alignment. Because prior to Indian independence, there were two blocs, Russian bloc, American bloc. But India did not join with any bloc, either America or Russia. Rather, India remained independent and establishes relations with all nations irrespective of any group. India supports non-alignment, and India was also a founder member of non-alignment, because non-alignment movement had 5 founders
Nehru of India, Tito of Yugoslavia, Nasser of Egypt, Nkrumah of Ghana, Sukarno of Indonesia. These were the founder members of non-aligned policy, and India was one of them. And the first conference of non-aligned movement was held at Belgrade on 1st September 1961. India also joined in that conference, and its headquarters is in Jakarta, Indonesia. India supports non-alignment policy. भारतीय वैश्विक नीतिर अन्य एक उपादान है भारत गोष्ठी निरपेक्ष नीति रे विश्वास करिथा कोनोसी गोष्ठी रे भारत जोग देवा पई चाहे नाही कोनोसी गोष्ठी रे जोग न दे स्वाधीन भावे समस्त राष्ट्र गुड़िक सहित संपर्क स्थापन करने संगे संगे विश्व शांति प्रयास करने भारत लक्ष्य। गोष्ठी निरपेक्ष नीतिर अर्थ है कौन गोष्ठी रे जोग न दे स्वाधीन भावे समस्त गोष्ठी पृथक रही समस्त सहित संपर्क स्थापन करने संगे संगे विश्व शांति प्रयास करने भारतर नीति यह गोष्ठी निरपेक्ष नीति कहले एवं भारत एक गोष्ठी निरपेक्ष नीतिर एक प्रतिष्ठाता सदस्य। एक गोष्ठी निरपेक्ष नीति को 5 जन राष्ट्र प्रयास करथिले 5टी राष्ट्र मुख्य नेता प्रयास करथिले सेमाने भारतर नेहरू युगोस्लाविया टीटो इजिप्टर नासेर घानार एनक्रुमा इंडोनेशिया सुकार्नो एमाने हेले गोष्ठी निरपेक्ष नीतिर प्रतिष्ठित सदस्य एवं यार गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन प्रथम अधिवेशन बसला सेप्टेम्बर 1 तारिख 1961 आमर युगोस्लाविया बेलग्रेड एवं यार मुख्य दफ्तर अच्छी जाकर्ता इंडोनेशिया। तो भारत गोष्ठी निरपेक्ष नीति को करता है समर्थन कौन गोष्ठी रे जोग न दे गोष्ठी पृथक रही समस्त राष्ट्र सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा करने संगे संगे विश्व शांति प्रयास करने भारत एक लक्ष्य। नंबर 3 पंचशील नीति रे विश्वास। इंडिया बिलीव्स इन पंचशील प्रिंसिपल्स। इट वाज साइंड इन जून 28, 1954 between Indian Prime Minister Nehru, Chinese Prime Minister Zhou Enlai. India till now believes in 5 principles. Number 1, what are these 5 principles? Every country should give respect to other nations. No country should interfere in the affairs of other nations. Non-aggression. No country should attack any country. Equality and mutual advantage. We should treat all equal. Mutual advantage means we should exchange good things among us. Then peaceful coexistence. We will reside peacefully. India salutes. India gives respect to these 5 principles. It is known as पंचशील principle. भारत पंचशील नीति रे विश्वास करता है। पंचशील नीति भारत प्रधानमंत्री नेहरू चीन प्रधानमंत्री जो एनलाय 1954 मसीहा जून 28 तारिख दिन स्वाक्षर करथिले। ए पंचशील नीति रे 5टी नीति रही अछि जहाँ को भारत सम्मान देता है। ये 5टी नीति है प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को सम्मान देवे कौन राष्ट्र अन्य राष्ट्र आभ्यंतरण क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे ना अनाक्रमण कौन राष्ट्र अन्य राष्ट्र को आक्रमण करेंगे ना समानता एवं परस्पर सहायता आम समस्त को समान सम्मान देवा परस्पर को साहाय्य करवा। 5 नंबर शांतिपूर्ण सहावस्थान आम मिलमिशि करवा बसवास। भारत यही पंचशील नीति करता है विश्वास। 4th point, support for UN. India always supports to UN because in the world UNO is the only organization which maintains peace. If UNO will not be found, then in the world there will not be peace. UNO is the guardian of the world today, and India always supports to UNO. And from 2019 till today, India is contributing 0.001%
0.834 0.834 to UNO. No doubt America is giving much more, second China, third Japan, fourth Germany, but India is also contributing annually to UNO. If nations will not contribute to UNO, UNO cannot survive. So India is contributing to the UNO for its existence, and India also supports always to the UNO in its work for disarmament, arms control, and other policies relating to maintenance of good environment in the world. India always supports UN, and it will continue to support UN. भारत वैश्विक नीतिर अन्य एक वैशिष्ट्य है भारत सर्वदा मिलित जातिसंघ को करिथाए समर्थन। प्रत्येक वर्ष मिलित जातिसंघ को भारत आर्थिक सहायता करिथाए। 1919 रु 2019 रु भारत 0.834% मिलित जातिसंघ को प्रदान करिथाए। जदियो अमेरिका बेसी देइथाए, द्वितीय रे चीन, तृतीय रे जापान, चतुर्थ रे जर्मनी, किंतु भारत मध्य प्रत्येक वर्ष जातिसंघर पांठी को देइथाए अनुदान। केवल भारत अनुदान नहीं न थाए जातिसंघ को, मिलित जातिसंघर जो कार्य अस्त्र शस्त्र को नियंत्रण, पृथ्वीर परिवेश को रक्षा, विश्व शांति पे प्रतिष्ठा पे प्रयास भारत सर्वदा मिलित जातिसंघ को करिथाए समर्थन। Point 4, Point 5, good relations with neighbors. पड़ोसी राष्ट्र सहित उत्तम संपर्क। भारत एक राष्ट्र जार उत्तर अच्छी चीन, दक्षिण रे अच्छी श्रीलंका, पश्चिम रे अच्छी पाकिस्तान, पूर्व रे अच्छी बांग्लादेश। भारत चारिपटे चारिटी देश रही, किंतु भारत वैश्विक नीतिर अन्य एक वैशिष्ट्य है भारत सर्वदा पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक सहित करिथाए उत्तम संपर्क। तेणु भारत दक्षिण एशिया रे शांति प्रतिष्ठा पाई 1995 मसीह जो सार्क संगठन गठन होता सेठारे भारत एक मुख्य भूमिका रही। तेणु भारत वैश्विक नीतिर अन्य एक वैशिष्ट्य है भारत तार पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक सहित उत्तम संपर्क प्रतिष्ठा करने सर्वदा करिथाए चेष्टा व प्रयास। So another feature of India's foreign policy is that India always tries to have good relations with neighbors. China is situated in the north, Sri Lanka is situated in the south, Pakistan is situated in the west, Bangladesh is situated in the east. India always prefers to have good relations with neighbors. Due to this reason, to establish peace in South Asia, India plays a vital role in the establishment of SAARC in 1995. So India always prefers to have good relations with neighbors. तेणु भारत तार पड़ोसी राष्ट्र गुड़िक सहित सुसंपर्क करने प्रयास करिता। आम चारिपटे जो राष्ट्र गुड़िक रही चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रभृति राष्ट्र गुड़िक सुसंपर्क करने भारत सर्वदा करता प्रयास। अपोज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एनपीटी सीटीबीटी। भारत वैश्विक नीतिर अन्य एक वैशिष्ट्य है भारत सर्वदा भेदभाव करुवा चुक्ति को करिथा विरोध। India always raises discriminatory policies because in the world there are some policies like NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, which gives special preferences to powerful nations. But India opposes it. India likes those policies which are equal for all nations. India always raises discriminatory policies. भारतीय वैश्विक नीतिर अन्य एक वैशिष्ट्य है भारत
भेदभावकारी चुक्ति नीति गुड़ी को करी थाए विरोध जेपरि कि सीटीबीटी एवं एनपीटी चुक्ति गुड़ी को प्रभावशाली राष्ट्र गुड़ी को अधिक प्राधान्य दे था। भारत से चुक्ति गुड़ी को समर्थन करी थाए जो चुक्ति समस्त राष्ट्र को समान मर्यादा प्रदान करी थाए, किंतु जदि कौनसी चुक्ति प्रभावशाली राष्ट्र गुड़ी को अधिक प्राधान्य दी थाए भारत से चुक्ति को कर न थाए समर्थन। नेक्स्ट एम्फासिस टू मीन्स भारत वैश्विक नीतिर अन्य वैशिष्ट्य है भारत सत् माध्यम को करी थाए विश्वास। Another feature of India's foreign policy is that India supports just means. India wants to achieve its national objective in just way, in noble way, in legal way. It does not want to achieve national object, national prosperity by illegal ways, unethical ways. India does not want to acquire others' territories. India does not want to interfere in others' affairs. India does not want to exploit other nations. India trusts, India believes in just ways to achieve national objectives. भारतीय वैश्विक नीतिर अन्य एक वैशिष्ट्य है भारत निजर स्वार्थ को सत् माध्यम हासिल करने प्रयास करिथा। अनैतिक माध्यम बा खराब माध्यम बा असत माध्यम रे भारत निज लक्ष्य को हासिल करने प्रयास करना था। भारत चाहि न था अन्य राष्ट्र अंचल गुड़ी को अधिकार करिबा, अन्य राष्ट्र गुड़ी को शोषण करिबा, अन्य राष्ट्र गुड़ी को मिथ्या प्रतिश्रुति दबा भारत करि था विरोध। भारत विश्वास करि था सत् माध्यम रे निज अधिकार को निजर लक्ष्य को करिबा हासिल। भारतीय वैश्विक नीतिर अनेक वैशिष्ट्य है पृथ्वी रे वर्तमान जो नूतन समस्या गुड़िक सृष्टि होछि भारत सदा सर्वदा प्रयास करिଥାଏ से समस्या गुड़िक समाधान करने में। Another principle of India's foreign policy is that India is always interested to solve those problems of the world which are endangering to the world, which are hampering to the world in total. There are some problems now which are hampering to the world, like terrorism, climate change, poverty, malnutrition, environment pollution, fear of nuclear disaster and war. Nowadays, terrorism is spreading all over the world. Nowadays, in so many other people, in some people of some nations, they are not getting food. Now, environment of the world is being polluted. So those problems which are for the world, India is always trying to solve these problems. India never remains silent for those problems which are danger for the world. India always supports to solve universal problems. भारत वैश्विक नीतिर अनेक वैशिष्ट्य है जो समस्या गुड़िक वर्तमान पृथ्वी विपदपूर्ण भारत से समस्या को समाधान करने सदा बेले आग्रह करिଥାଏ। पृथ्वीर समस्या प्रति भारत नीरव रही न था। जो समस्या गुड़िक वर्तमान पृथ्वी को प्रभावित करुच्ची भारत सर्वदा प्रयास करिଥାଏ ये समस्या गुड़िक समाधान करने में। एपरिक उग्रवाद समग्र पृथ्वी को व्यापी जाऊँगी, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को प्रभावित करुच्ची, पॉवर्टी पृथ्वीर अनेक देश अच्छा जो देश लोक मैंने कि दारिद्रतार सीमा रेखार तले अच्छा, मालन्यूट्रिशन पृथ्वीर अनेक देश अच्छा जो देश लोक मैंने सुषम खाद्य पाऊना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वर्तमान पृथ्वीर परिवेश वायुमंडल प्रतिष्ठित होगा जाऊँगी, फियर ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर एंड वार आणविक अस्त्र संभावना अनेक समय सृष्टि हो।
तेणु वर्तमान समय जो समस्या गुड़िक पृथ्वी प्रति विपदपूर्ण से समस्या प्रति भारत नीरव द्रष्टा हो रोना है। भारत सदा सर्वदा प्रयास करुच्ची जो समस्या गुड़िक पृथ्वी पर विपदपूर्ण से समस्या गुड़िक समाधान करने एक गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान पाए। ताले आज वीडियो आम देखिले भारतर वैश्विक नीतिर प्रमुख उपादान और वैशिष्ट्य। मुझे जानूची आमर पिला माने पूरा बुझी जाइथिबे यह +2 एवं +3 पिला उभय जरूरी। तेणु जदि ये वीडियो को तुमको पसंद होची लाइक करिवो, शेयर करिवो, सब्सक्राइब करिवो, जहाँ कि तुमरो भविष्य पाई अनेक गुरुत्वपूर्ण वीडियो गुड़ी को तुम हो उपलब्ध। So in this video we have discussed some main pillars as many as 8 pillars of India's foreign policy. I think it is very useful for +2, +3 and those students who are appearing computer examinations. So if you feel like my video, share it, subscribe my channel so you will get future videos which will be helpful to you in future examinations. So thank you to all. Again we will be here in the next video. Thank you to all. Goodbye. Smile please. Thank you.